हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स ग्रोथ चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने ग्रेविटेशन टॉपिक जो कि 10th क्लास का है वो स्टार्ट किया था। उसका एक पार्ट देखा, उसके आगे का पोर्शन अभी हम देखेंगे। नाउ इन लास्ट टॉपिक वी हैव सीन दैट फोर्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. Because of the effect of force, object produces motion, means it displaces, all these things. Now depending upon this force and the effects of force, the scientist Newton produces laws of motion as well as the equations of motion, and from this the gravitation or the force of attraction produced between the objects which are lie on the earth surface. But now we have to see the force. There are basically two types of force in this planetary motion or in the gravitation. There, suppose first one is the centripetal force and another is centrifugal force. Now what is the difference between centripetal force and centrifugal force? Now centripetal force, this force is also known as center seeking force. Center seeking force. अभी इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल जो कि हर बार अपन देखते रहते हैं। अगर एक धागा लिया और उसको एक एंड को हमने क्या कर दिया, स्टोन बन दिया, और दूसरा एंड जो है उसका ऊपर अपने इस फिंगर्स में पकड़ के उसको हम क्या कर रहे, मूवमेंट कर रहे सर्कुलर शेप में। ये रहेगा स्ट्रिंग और ये रहेगा स्टोन। तो इसको सर्कुलर शेप में मूवमेंट करते वक्त हर बार वो क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट करके फिर से अट्रैक्ट होगा सेंटर की तरफ से। मतलब ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये फोर्स कंटिन्यूअसली जब तक रहेगा वो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जो कि स्टोन क्या करेगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर मूवमेंट करेगा जब तक इस स्ट्रिंग को यहां से फोर्स ऑक्युपाई होगा। अगर हमने यहां से उसका मूवमेंट बंद कर दिया तो ये स्टेप बाय स्टेप उसका जो ये मोशनल भाग है, जो सर्कुलर शेप है, कम कम होते जाके फिर सेंटर की तरफ आ जाता है, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स. व्हाट इज मीन बाय दैट सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स द फोर्स व्हिच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट towards the center and move along the circumference of circle. वो circumference of circle के ऊपर circular motion में रहता है, लेकिन वो सेंटर की तरफ खींचते रहता है। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो अगर हमने फोर्स लगाया है फिर भी ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर दूर जा रहा है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ पे मेला लगा हुआ रहता है वहाँ पे बीच में एक, और यहाँ पे उसको ऐसे लंबे लंबे झूले लगे वाले रहते। अगर इसको फ्लो कर दिए तो ये हर बार उसकी स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते रहता है। या सोलर सिस्टम में प्लैनेट, सन, मून, इनका जो भी रिवोल्यूशन है, इसका रिवोल्यूशन इस सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ कन्वेंस करके न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बताने से पहले ही केपलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस मून, अर्थ और सन की रिवोल्यूशन के ऊपर 3 लॉज
प्रिपेयर किए हैं। अब इस 3 लॉज में फर्स्ट है केपलर्स फर्स्ट लॉ। वी हैव टू सी केपलर्स फर्स्ट लॉ। Kepler's first law. Now in this Kepler's first law, this Kepler said that the orbit, what is meant by orbit? The orbit. What is meant by orbit? Suppose we have seen in chemistry, now this will be the nucleus and the electrons. Nucleus means number of protons and neutrons combination. This is the nucleus and electrons are revolving in different orbit. In the same manner, in solar system, sun is the nucleus which attracts the planets towards themselves with a force. That means this sun is a produces centripetal force. Centripetal force. And because of that force, the planets are revolve around the sun in different orbit. Different planets construct different orbit. But this orbit of a planet, इसका orbit of a planet revolves around the sun. The orbit of a planet revolves around the sun in an elliptical path. In an elliptical path at one of the foci. At one of the foci. Now what is meant by foci? Now see here, in reflection of light we have seen there are different types of spherical mirror. One is the concave and another is convex mirror. Instead of this spherical mirror, we have seen that this will be the principal axis which goes through the center of curvature and pole, and when light is incident, after reflection comes to the earth, go away from the certain point, that point is known as a focus point. And if we have taken two types of spherical mirror, it becomes lens. And in our solar system, sun revolves around the planet. Now these planets are revolving in the form of lens, and in lens structure there are two foci. So we have told that in first law, the orbit of a planet, प्लैनेट का जो भी ऑर्बिट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, वो अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. ये कौन सा पाथ रहता है? इलिप्टिकल पाथ. यहाँ पे अगर समझो सन है, उसके बाजू में ये जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, ये है इलिप्टिकल पाथ. नाउ दिस इलिप्टिकल पाथ इज एट द वन ऑफ द फोसाई. यहाँ पे तो कौन सा भी एक फोकल पॉइंट रहेगा तो वहां से जाएगा, या फिर इधर का कौन से ना कौन से एक फोकल पॉइंट से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व होते जाएगा. इसीलिए केपलर्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एट one of the foci. Now next, second law, Kepler's second law. Kepler's second law. Now we have seen in the first law that planet is revolves around the sun
in an elliptical orbit at one of the foci. Now see here, this will be the sun and this is the planet revolving around the sun. Now see here, if we have calculated the distance traveled by the planet around the sun at different situations. Now see here, there are three different situations we have drawn: A, B, C, D, and this will be E, F. Now the line joining from sun, the line joining from the sun to the foci or the focus point, the distance traveled by the planet traces इक्वल एरिया. मतलब अभी सन के बाजू में यहाँ से लाइन ज्वाइन की है S to A. ये जो पॉइंट है प्लैनेट के ऑर्बिट के ऊपर है. यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ की, इसके अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करे हैं ए बी, उसी तरह C to D ये पोर्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इन सब का एरिया दैट मीन्स CSD and ASB ये दोनों सेम एरिया ट्रेस करते हैं. दिखने में तो हमको लग रहा है ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इलेप्टिकल पोर्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उनका एरिया सेम रहता है. इसीलिए केप्लर्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट जो है वो है the line joining the planet and the sun. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Equal areas in equal interval of time. अभी हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, यहाँ पे सन है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते जा रहा है. यहाँ पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ए बी या सन की करीब से ये सी डी, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो ई एफ, ये सभी एरियाज इस केप्लर सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या रहेंगे? एरिया ऑफ सी एस डी equal to area of ESF equal to area of ASB. मतलब ये जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है उसको सन की तरफ से जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इक्वल एरिया ट्रेस करते हैं, स्वीप्स करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ थर्ड लॉ ऑफ केप्लर्स third law. Kepler's third law. Now in this third law we know that this distance from the sun to the planet, we know that the radius, and the time required to revolve this planet around the sun is known as period of revolution. So this period of revolution and radius are correlated in the Kepler's third law. Now this Kepler's third law states that the radius
Now this Kepler's third law explained in our next part in detail. In this period we have seen Kepler's first law, centripetal force, and Kepler's second law. So if you have any doubt, अगर आपको इस पढ़ाई में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दो, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आपके लाइक से बताओ. ओके बाय.